8.4 BSc part 1. Suppose that L1, L2 and L3 are given lines ST straight line. Direction cosines of L1 are L1 and M1 N1, and direction cosines of the L2 are the L2 M2 and N2. Direction cosines of L3 are L2, L3 and N3. Since lines L1, L2 and L3 are the mutual perpendicular, then L1, L2, M1, M2 plus N1, N2, L2, L1, L2, L3 प्रोडक्ट किया है और ऐड किया है लाइन 1 एंड लाइन 2 को, देन लाइन 2 एंड लाइन 3, देन लाइन 1 एंड लाइन 3, M2 and M3 plus N2 and 3, then L1, L2, M3, line L3 and 3, M3, N1 and N3 is equal to 0. Let L be the line having direction ratio L1, L2 plus L3 and N1 plus N2 and plus 3. Let theta 1 be the angle between the L1 and line L and L1. Then cos theta is equal to L1 plus L2 plus L3 product with L1 plus M1, M1 plus M2 plus M3 प्लस N1 ऐड कर लेंगे जो हमारी N1 L1 L2 प्रोडक्ट विद L1 and M1 M2 M3 and add and divided upon the magnitude of L1 square plus M1 plus R2. Direction ratio it's the magnitude whole divided with L1 plus L2 plus L3 plus M1 plus M2 plus M3 whole square plus N1 plus M2 plus M3 इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, सेम है. Then L plus 0 plus 0 upon 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0. Cos theta is equal to 1 upon theta. Line between L and L1. Then theta is equal to 1 upon under root 1 plus 1 plus 1. Theta cosine inverse is equal to 1 upon under root 3. Let theta be the angle between L and L2. Then cos theta 2 L2 L1 plus L2 से cosine डायरेक्शन cosine of 2 से प्रोडक्ट करेंगे और ऐड करेंगे ऑल cosine डायरेक्शन cosine L1 L2 and plus 3 डिवाइड करेंगे और ऐड करेंगे एंड जो विच इज़ द प्रेजेंट. तो हम प्रेजेंट इज़ L1 एंड इट्स डायरेक्शन साइन L प्लस M N से डिवाइड कर देंगे डायरेक्शन रेशो से, देन इट इज़ बिकम 1. सेकेंड L2 लेंगे हम लाइन L2 डायरेक्शन को साइन L2 एंड एग्जिस्ट L2 एज L2 से प्रोडक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे एग्जिस्ट वैल्यू में ओनली 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 एंड ऑल अदर आर 0. Cosine theta is equal to 1 upon under root square root of 3 R2. Theta 2 is equal to cos inverse of 1 upon square root of 3. Now let theta 3 for L3 L and M3 and the other lines ratio. We add and divide the same process. And the last is L3. So L3 is exist and only is square root of 3 cos theta and 1 upon cos square root of 3 cos inverse of
1 upon square root of 3. From 1 and 2 and 3 is the proof that theta 1 is congruent to theta 2 and the congruent of the theta 3. ये doing प्रोसेस है, स्टेप्स हैं L1 से L2 से हमने लाइन्स हैं, इनमें हमने फर्स्ट टू डायरेक्शन को साइंस ऑफ L1 L2 एंड 3 से स्टेप ये किया कि हमने यहाँ पे इसे L1 से प्रोडक्ट किया है बोथ ऑफ द फर्स्ट L डायरेक्शन को साइन ऑफ कंपोनेंट कहलाते हैं x, y एंड z. For example, x is L1, L2, L3. M1, M2, M3 are the y2 and z is M1, N1, N2 and N3 of L1, L2 and L3. तो हम इसे प्रोडक्ट करेंगे और स्क्वायर करेंगे. ये स्टेप्स डिवाइड स्क्वायर ऑफ दिस x1 L1 L2 L3 x1 x2 x3 whole square plus n m1 n2 n3 whole square plus n1 plus l2 and L3, and the direction cosines of L1 whole square plus m1 whole square plus n1 whole square. So हमारा three angle of the cos theta are congruent. Post as